So this is our modulation techniques. So we have defined the modulation techniques, different type of characteristics we have defined. So first of all, we will revise what we have done today, up till today. So we have studied the need of modulation, we have studied the definition of modulation, then after that we have studied the various three continuous wave modulation, amplitude modulation, frequency modulation, and the phase modulation. And then we have seen this derivation regarding the amplitude modulation, and we conclude that there are the two side bands, lower side band and upper side band, lower side band and upper side band. And we have seen the bandwidth of AM is twice FM. Then in the previous lecture, and then we have studied the different type of derivation regarding the transmitted power, carrier power, then current and voltage relationships. Then we have studied the modulation index. We have seen these numericals, and hope so you have solved this numerical. So anyone is having solution with him should solve this equation. So here I will solve for you. Okay, so I will solve for you. This is the, so what is Wm? So Wc is, this is Wc and this is Wm. And what is modulation index is given 30%. 30% means 0.3. Okay, so now maximum amplitude of the carrier signal, also sketch the required value. So we have the definition of M equals to, as per our previous discussion, which formula I will use? I will use this formula, this one, E max minus E minimum minus E max plus E minimum. I know EM, I know M, I have to calculate EC. Okay, so I will show you again the same numerical. I will use eraser here. Okay, so I will use pen. Now here M equals to sorry, EM by EC. EC हमें पता नहीं है, EM हमें पता है, कितना वैल्यू है EM का 20, और M पता है 0.3, तो EC हम आसानी से निकल सकते हैं, सिंपल कैलकुलेशन. Then evaluate maximum amplitude of the carrier signal, also sketch the frequency spectrum. So how to sketch the frequency spectrum? So the frequency spectrum is sketched. How to sketch the frequency spectrum? Fc minus Fm, Fc plus Fm. ये आपका Fm है, ये आपका Fm है, और ये आपका Fc है. दोनों का एडिशन करेंगे तो अपर साइड बैंड मिलेगा, दोनों का सब्सट्रैक्शन करेंगे तो लोअर साइड बैंड मिलेगा. ओके, सो वी विल मूव फॉरवर्ड. ये हमें पहले ही डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियसली. नाउ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हमने डिस्कस किया था. वी हैव डिस्कस द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. नाउ आई विल इरेज दिस. सो दिस आई हैव इरेज्ड. Okay, frequency modulations. We have discussed this derivation of the frequency modulation, yes or no? So up till this point we have studied, okay, frequency modulation. Now today we will go for this Bessel's function relation. So why we are going for the Bessel's function? Because
yesterday I have given you hint that we have to calculate sine of sine. So when we calculate sine of sine, at that time we have to go for the Bessel's function. Otherwise directly we can use the formula sine a plus b. What is sine a plus b? Sine a cos b plus cos a sine b. But due to the sine of sine, sine omega ct plus mf sine omega mt, I am zooming this. ये देखो यहाँ पे ये साइन है, सॉरी आई विल यूज पेन, साइन ऑफ साइन है ये, ओके। तो मैं क्या करूँगा, तो a इक्वल्स टू, सो आई विल इरेज दिस, सो साइन ऑफ साइन है, इसीलिए हमने क्या यूज़ किया है, बेसल्स फंक्शन यूज़ किया है। तो यहाँ पे आपको ये J0, J1, J2, J3 ये जो दिख रहा है, these are the Bessel's function coefficient. So how to expand this? So V equals to A J0 mf sin omega ct plus J1 mf sin omega ct plus omega m minus sin omega ct minus omega mt plus J2 mf sin omega c plus twice omega m plus sin omega c minus twice omega m. So plus omega m omega n sin omega, यानी ओमेगा सी से ओमेगा एम सब्सट्रैक्ट होगा, सिमिलरली ओमेगा सी में ओमेगा एम ऐड होगा। और ऐसा कब तक होगा, जब तक कि बेसल्स फंक्शन का एक्सपेंशन ख़त्म नहीं हो जाता। सो दिस इज़ द बेसल्स फंक्शन यूज टू कैलकुलेट यूज टू एक्सप्रेस द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ द FM वेव। So what are the conclusions from the Bessel's expansion? We conclude that FM has infinite number of sideband as well as the carriers. They are separated by the carrier FM, twice FM, thrice FM and so on. The J component eventually decreases in a value as n increases. So when at the higher frequency the value of the J component means the Bessel's value is less when as compared to the value of n. The modulation index MF determines how many sideband components have significant magnitude. The negative value of J coefficient represent 180 degree phase change. Okay, so what is the negative value of the J represent 180 degree phase shift. So what are the conclusion? Again I am repeating why we are using Bessel's function, because we are calculating the complex relation. What is the complex relation? Sine of sine, sin omega ct plus mf sin omega mt. So for such type of equation we have to go for the Bessel's function expansion, and then we are drawing some conclusions. First one is FM has infinite number of sidebands as well as carriers. They are separated from the carrier by FM, twice FM, thrice FM and so on. The J component eventually decreases in value as n increases. Similarly, the modulation index FM determines how many sideband components have significant magnitude. The negative value of J coefficient represents 180 degree phase change. So these are the conclusions that we draw as per the Bessel's function expansion. Now we will move forward. So therefore the FM, the total transmitted power, always remains constant. This is the next conclusion. In if MF means modulation index in frequency modulation, okay, increases the bandwidth also increases. So जैसे जैसे हमारा modulation index बढ़ेगा, as per that value again the bandwidth also increases. Actually amplitude of the carrier signal does not remain constant. Frequency spectrum for FM is 0.5. So therefore we are having here omega c's value is 0.94. So these are the Bessel's function calculation. तो ओमेगा सी की अगर MF की वैल्यू यानी मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू 0.5 है, तो कितने बैंड्स आएंगे उसमें आएंगे 4 बैंड्स। स्टार्ट होगा वैल्यू ओमेगा सी माइनस ट्वाइस ओमेगा एम, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम एंड फाइनली ओमेगा सी प्लस ट्वाइस ओमेगा एम। सो बैंडविड्थ कितना होगा? बैंडविड्थ इज द अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है माइनस लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी. व्हाट इज अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी? ओमेगा सी प्लस ट्वाइस ओमेगा एम
माइनस ओमेगा सी माइनस ट्वाइस ओमेगा एम। सो ओमेगा सी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और हमें कितना मिलेगा 4 ओमेगा एम। ओके, so that's why FM is more advantageous than AM. Then bandwidth requirements of FM. So this is as the modulation index increases, bandwidth also increases. Although the number of sidebands components is theoretically infinite, a lot of sideband have insignificant relative amplitudes, and thus to calculate bandwidth for FM signal we actually require Bessels function table for FM. तो ये जो बेसल्स फंक्शन टेबल है ये आपको इंटरनेट से कहाँ पे भी मिल जाएगा। इट इज़ जस्ट लाइक अ लॉक टेबल जैसा होता है वैसा ही बेसल्स फंक्शन का टेबल होता है। मैं आपको दिखाऊंगा बेसल्स फंक्शन क्या होता है, तो पहले हम ये डिस्कस कर लेंगे। ओके, कार्सन्स रूल क्या होता है, टू कैलकुलेट एक्चुअल बैंडविड्थ ऑफ एफएम दिस अप्रोक्सीमेशन इज यूज्ड। What is the Carson's rule? Bandwidth of FM is twice maximum frequency deviation plus maximum modulating frequency. So this is the Carson's rule to calculate actual bandwidth of the FM. What is the bandwidth required for an FM signal in which modulating frequency is 2 kHz and maximum frequency deviation is 10 kHz? तो bandwidth कितना हो जाएगा उस फॉर्मूले से, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन कितना है 10 kHz और मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 kHz। तो 2 × 10 kHz प्लस 2 kHz एज पर द कार्सन्स रूल, सो वी गेट 24 kHz। उस पर से हम बैंडविड्थ मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालेंगे, MF इक्वल टू डेल अपॉन FM विच इज़ इक्वल्स टू 10 kHz डिवाइडेड बाय 2 kHz विच इज़ इक्वल्स टू 5। व्हाट इज़ द बैंडविड्थ 32 kHz। ओके, सो एज per the rule we should have as per the Carson's rule 24 kHz is the bandwidth required, but still we go for the 32 kHz because it increases the bandwidth. So bandwidth increase is always good. जितना ज़्यादा bandwidth होगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नल उस FM में क्या कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसके बाद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन क्या है, it is the maximum deviation del is directly proportional to Vm, so del upon Vm will be constant, so 2 kHz per volt। MF1 की वैल्यू निकाली हमने, del 1 upon FM 48 into 10 to the power 3 divided by 500, then 144 kHz equals to 1 and MF3 equals to 20 kHz upon 200 Hz which is equals to 100. So that is the numerical for you. Then we are having the second numerical, find the carrier and modulating frequency, the modulation index and maximum deviation of the FM wave represented by voltage equation V equals to, हमें एक voltage equation दिया है 12 sin 6 into 10 to the power 8 t plus 5 sin 1250 t. What power will dissipate in the 10 ohm resistance by this FM wave? Standard equation of FM is V equals to A sin omega ct plus MF sin omega mt which is equals to 12 sin 6 into 10 to the power 8 t plus 5 sin 1250 t। तो ए की वैल्यू अब 12 हो गई। अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करूँ तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 12, ओमेगा सी की वैल्यू हो गई 6 into 10 to the power 8, एम पी की वैल्यू दी है 5। ओके, सो देन ओमेगा एम की वैल्यू कितना है 1250 रेडियन पर सेकंड, ओमेगा सी की वैल्यू है 6 into 10 to the power 8। तो ओमेगा सी से हम एफ सी निकाल सकते हैं, उसकी वैल्यू आती है 95.5 मेगाहर्ट्ज़। ओमेगा एम से हम एफ एम की वैल्यू निकाल सकते हैं 199 हर्ट्ज़ और एम एफ की वैल्यू हमें इक्वेशन से मिली है वो है 5। सो डेल की वैल्यू क्या है एम एफ इंटू एफ एम 995 हर्ट्ज़ वेयर द पावर इज़ वी आर एम एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, इट इज़ 7.2 watt। Now next example, a carrier wave of amplitude 5 volt and frequency 90 megahertz is frequency modulated by a sine wave of 5 volt and frequency 15 kilohertz. The frequency deviation constant is 1 kilohertz per volt. Sketch the spectrum of the modulated signal. So J0 MF equals to 0.94, J1 MF equal to 0.16, J2 MF equals to 0.02। EC की वैल्यू है 5 वोल्ट, एफ सी की वैल्यू है 90 मेगाहर्ट्ज़, ई एम की वैल्यू है 5 वोल्ट, एफ एम की वैल्यू है 15 मेगाहर्ट्ज़। डेल अपॉन ई एम कितना होगा 1 के
डेल की वैल्यू हो जाएगी 5 किलोहर्ट्ज़, अगेन वही फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ मैं। एम की वैल्यू है डेल अपॉन एफ एम 5/15 विच इज़ गिव्स अस 0.333 और J0 J1 J2 की वैल्यू दी है तो कितना बैंड्स आएगा, 4 बैंड्स आएंगे। V इक्वल्स टू A इंटू J0 MF साइन ओमेगा CT प्लस J1 MF साइन ओमेगा MT देन साइन ओमेगा C माइनस ओमेगा M प्लस J2 MF साइन ओमेगा C प्लस ट्वाइस ओमेगा MT साइन। ओके, A1 A2 A3 की वैल्यू हम रेडीली निकाल सकते हैं। और ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ AM अगेन यू कैन, ये हमने देखा है प्रीवियसली, तो ऐसे हम AM को भी ड्रॉ कर सकते हैं। सो that completes our discussion regarding unit number 2. I think only PM is remaining, so in the next lecture we will discuss the phase modulation, how we go for the phase modulation. From my side the today's lecture is complete and you can visit in the tomorrow's lecture, and we will complete our unit number 2 tomorrow, and again we will recall all the things that we have covered up till now. Any question, any difficulty, you can ask me now, because the I think 10 minutes are left, 10 to 20 minutes are still remaining, so I have specially delivering this lecture to solve your difficulties. If any difficulty, you can ask me. I think today that there are 3 participants, including me there are 4 participants, so I will not do anything. So it is up to you people that how you go for the lectures, because these lectures are very helpful to you. And definitely when you face the interviews right now, there is no any what एग्ज़ाम का फियर हमारे से निकल गया है। जो एग्ज़ाम का फियर रहता था, अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम हो गई तो हम कुछ टेंशन ही नहीं ले रहे हैं, लेकिन कभी ना कभी आपको तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आगे जाके इंटरव्यू फेस करना है या जो कुछ भी फेस करना है, तो आपको सबसे पहले तो आपके सब्जेक्ट्स पूछते हैं इंटरव्यू में। आप में से बहुत लोगों ने इंटरव्यू फेस किया होगा तो आपको पता होगा। टेल मी द सब्जेक्ट नेम्स, ऑल द कोर्स नेम दैट यू हैव गॉन थ्रू। फिर इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं और उनके सामने लैपटॉप होता है, वो क्या करते हैं, वो गूगल पे सर्च कर लेते हैं कि आप प्रॉपर आंसर दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। सो unless and until you study properly you will not get the things. So that's why it is request from my side that those who are not attending the lectures, they should attend these lectures, and these lectures are quite interesting. Already I have uploaded the notes and other things on your Google Classroom. You should go through it and you should understand the importance. Unless and until you take interest, you should take interest in your subject or course, then it will be helpful for you. Otherwise it is difficult for you people. So any difficulty up till now you can ask me and I will try to solve. Tomorrow we will complete the phase modulation and we will finish our unit, because already I think there are 12 to 15 lectures are completed, and for each unit we are having 8 lectures, so 8 plus 7, yes, it is okay. 15 lectures are sufficient to complete the 2 units. Then day after tomorrow, that is on Friday, we will go for the unit number 3. That unit number 3 is AM transmitter. Again these units are very easy units, because there is a block diagram explanation. Such type of units are present after this unit. Block diagram explanation, block diagram explanation, circuit diagram explanation, waveform explanation, such type of subject this one. Okay, so any difficulty you can ask me, otherwise I will end this meeting, and we will continue tomorrow phase modulation discussion, and as well as we will start next unit from Friday, that is 27th of August 2021. So thank you very much. I think there is no difficulty from your side, so I will end this meeting, and we will meet
tomorrow, same time, Zoom on a Zoom platform. Okay, so thank you, have a nice day.